तो फाइनली ऊपर मिल गया, बैठ चुका हूँ कैब में और जा रहा हूँ एयरपोर्ट टर्मिनल 2। Hello everyone, my name is Ayan. Welcome back to the channel. I hope you are doing great. आज एक नए दिन, एक नई सफ़र शुरू हो चुका है। मैं पहुंच चुका हूं बागडोगरा और बस मेरे पीछे है बागडोगरा का अराइवल टर्मिनल। यहां से कार पार्किंग लॉट में है, कार में सामान डालना है और निकलना है। तो खाना आ चुका है बिल्कुल गर्मा गर्म और वही खाना खाएंगे और उसके बाद वापस रवाना होंगे पेलिंग के लिए। सो टुडे इज़ डे 2 और अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अभी निकल रहे हैं पेलिंग के डे साइट सीइंग के लिए। बस आइटिनरी सेट कर रहे हैं कि क्या क्या जगह कवर करना है और फिर निकलते हैं। तो साइट सीइंग के लिए तैयार। तो हम पहुंच चुके हैं स्काई वॉक। यहाँ पे टिकट काउंटर पे जाना है, टिकट लेना है। तो टिकट ले लिया है। द कॉस्ट इज 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉर टूरिस्ट। आजकल सरकार को ऐसे वार्निंग्स भी लिखने पड़ते हैं। इट्स बुद्धा स्टैचू ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन and this is the view from the top. This is the skywalk and
on a glass floating. It's a viewpoint where you can see 360 degree all the peaks. लेकिन अभी जो है सब क्लाउड कवर के अंदर है, so कुछ भी visible नहीं है. But the sun is bright and it's warm. This is the Rimbi Waterfalls, and this is the second spot of the day. Welcome to Khechuperi Lake. Point number 3 for the day. Fourth spot of the day, and it's Pemayangste Monastery. बर्ड पार्क तो क्लोज था, तो अंदर नहीं जा पाए. अभी जा रहे हैं रैबडेंसे पैलेस, which is also known as Rabdentse Ruins. So this place used to be the capital of Sikkim. तो जगह का हिस्ट्री मैंने डाल दिया है, वीडियो पॉज करके देख लेना. तो रूइंस देखने के बाद अब हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्पॉट विजिट करने जा रहे हैं. कहाँ है दिखाता हूँ. तो डे ट्रिप के बाद वापस होटल आ चुके हैं और आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और मैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.